Yeah, I'll start with a blank window because right now I really want to know what you guys are thinking about the GSI mains. So let's start today's orientation classes. I am pretty sure you guys have already had your orientation classes earlier. So I want to know first thing is few of your questions so that I can orient my discussion according to the questions of you guys. Second is Second is, I also want to know that if you guys have any doubt about the exam, any kind of doubt during pre, mains, and interview, any kind of doubt if you have, be it educational or any other aspect that I want to know. And the third thing I want to know really that, yeah, really how you guys are thinking to prepare yourself at least before 22 months before the examination, right? So the examination is in June, if I'm not wrong. Okay, so if I am wrong anywhere, stop me and correct me, okay? Because I did not notice the date of the examination. So it's last week of June, right? So we have full 2 months to prepare, and trust me, that is more than enough to prepare for mains, I believe. Because as much as time you will get, the problem becomes कि आप confuse होने लगते हो थोड़ा time के साथ साथ, doubts आने लगते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो what if my marks is like that, what if my marks are like that. तो ये बहुत लोगों का questions मेरे पास आ रहा है about prelims marks, so I will go through that as well. So काफी डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. So today I am going with your question and my kind of explanation of your different doubts and preparation. These are the three things I am going to cover today: how to start and how to believe in yourself also. If you need somewhere my any support, I'm there. Okay. Now, with these three things, I will start today, but we will proceed to syllabus. That what are the point in the syllabus is very important to your mains, and how to cover from where to cover those things. First, second is previous year questions, that the previous year questions, how they took part in your preparation. So these are the few things. Now, I will go second क्लास में हम लोग शायद ये डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में वी विल गो थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट के डेप्थ में. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी और send me the part. I can suggest you the sources, okay, from which sources you should go through. Right now, before starting, few of you have this doubt कि कितना पेज लिखना होता है, पेज कितना बड़ा होता है, वगैरह वगैरह. So those who have already appeared for the mains, this is not for you definitely, and this is for those who haven't appeared for the first time. So this is the question paper of mains examination. So the question paper, size of the question paper and the answer script of the question paper is the same. Okay, so the size probably will be less than the height of an A4 paper. Less than means maybe 1 inch less than an A4 paper, and width is same as A4 paper. So if you're practicing in a simple copy, the copy we used to use during our school, BSc, MSc, it's completely fine to use it. You don't need to buy extra things to prepare now, because you have only 2 months. When we have 1 year or so, 6 months, we do those kind of things. Abhi 2 mahine mein, we don't need that kind of preparation right now. All we need to prepare ourselves with geology. That's it. Now, this is the kind of paper you will have. Now, in this paper, you need not to do margins, okay? You don't require to do. People are there who will say that margins are definitely good to present your answer, but you don't have to, because you will not get time much there, okay? Time is a very, very important factor there. Now, margin नहीं देंगे तो कुछ लोग होते हैं जिनका handwriting will be like this and will be going downward. They do have a upward and downward curves, right? So उनके लिए थोड़ा मुश्किल है. तो I will suggest them कि अभी से थोड़ा writing straight करने का practice करो at least. And if you have a ruled copy,
it's not necessary कि you have to have write in the ruled copy only. It's completely fine. You can use anything, rule or unruled. It's completely fine. But those it अगर writing direction में problem है उनके लिए थोड़ा practice करना चाहिए. बाकी लोगों के लिए it's completely fine. Okay, so the first key point I'm trying to address is you don't need to draw. What I'm saying is you don't need to draw margin if not necessary. ठीक है, अगर आपको लगता है necessary and you have plenty of time, some people are really expert, then do. Otherwise, no, you don't need to draw a margin. Okay, draw a margin. It's completely fine that if you are going without margin. Yeah. So the next point is, so answer writing. In this kind of copy, you will get the answer. You will have a question here. You will have a question here, and there will be space given as answer. The question and followed by answer. This is the space. So this page will be for 5 marks. There will be 2 pages like this for 10 marks. There will be 3 pages like this for 15 marks. There will be 4 pages like this for 20 marks. There will be some question which have a 15 marks of question, but there will be 4 pages as well. There will be very few questions which have 15 marks, but there will be 4 pages, which is not normal, right? So another key point I'm trying to address here is you don't need to fill every pages. Okay, fill every pages. Okay, so all I'm saying these things based on my 3 years of experience with the exam and my preparation, and some of the toppers I have discussed with them as well. So these are my views. All I am sharing with you, which can be necessary, because जो topper होता है, जो 2 rank करता है, जो 10 rank करता है or something, so they have. So all they have is 3 stages के marks together they have, and they become a topper, right? It's not because how you write in the exam. It's because how you get the cumulative marks in the exam. Okay. So you don't need to fill every pages of the question paper or answer sheet. Okay, that is not necessary. Now, कैसे में necessary नहीं है? So 5 marks के question में as you have. Okay, so 5 marks the question may, as you have this much amount of space. Okay, those who has joined new, I'm telling you, I'm giving the brief of this class again, that I am going to take an orientation class. Obviously, you have had already 1 classes, but this class is basically how you are writing your exam, about the answer script, about the questions and doubt if you have, and how am I going to proceed in the next classes. So this is a class about that. This can help you definitely. Okay, so so I was telling that this is the size of an answer script, exactly the size of a question paper. So if you have any question paper, if you can download the question paper from somewhere, the shape and size of the obviously all of you have your prelims question paper, right? I forgot. Prelims question paper, all of you have. So the prelims question paper, size of the prelims question paper is exactly same of the mains question paper, and that is exactly same of your answer script. So it's completely fine. You can see the size of the question paper. That is the size of your answer script. Now, 5 marks question, you will have a question here on the top of the pages, and the rest of the page will be blank to fill the answer, right? So this is a 5 marks question. Now the 5 marks question, how can how can you proceed in a 5 marks question? Suppose there is a question about a hotspot, that write about hotspot this and that, or a mantle plume. What do you have to do is, first you draw the diagram of a mantle plume, that this is a mantle plume. This is a mantle plume. Now, plume you've drawn. This is the plume. Now, this is the duct, and this is the size of the plume or head of the plume. And this will be your volcano or hotspot, or from where the eruption is going on and stuff. So first you have to draw. If you know the question answer, if you know the answer of the question, first you have to draw the diagram.
ठीक है, this is the first thing you have to do, because even if you don't have much time, at least तुम्हारा diagram will represent the answer and you will have 2 or 3 marks. तुम्हारा पूरा 5 से 0 तुमको नहीं मिलेगा, right? This is a very smart way. This is how I deal with. Okay, so all you have to do, if you know the question कि हाँ ठीक है मुझे ये question आता है, बनाना नहीं पड़ेगा, तो जब आता है and if you know any relative diagram of that, draw that first. So this is the third point, that the diagram should come first. Okay, diagram first, then you start writing, filling. So it's like diagram draw कर लिया, जगह जितना चाहिए था तुमने ऑक्यूपाई कर दिया, अब उसके बाद you fill with the text, rest you fill with the text, right? So the answer will look good, representative will be looking good, and everything will be fine. Now the fourth point is, if you're drawing a diagram, side you have to choose, left and right. Okay, so if you are drawing from the starting page in the left side of the diagram, continue that throughout the answer script. If you are drawing in the right side of the diagram, right side of the page, you're drawing the diagram, continue that throughout the exam. But anytime if you make any mistake that left का भी diagram डाल दिया एक question में and next question में तुमने right में डाल दिया, which is completely fine. मैं जो चीजें बोल रही हूँ, these are not necessary, but if you do these, आंसर दिखने में सुंदर लगता है, your copy becomes representatively very good, okay, towards the examiner. अच्छा दिखने में लगता है, and if you mistake, examiner भी उतना नोटिस नहीं करेगा कि लेफ्ट में था राइट में आ गया. मैं जो बोल रही हूँ वो है कि दिखने में रिलेटिव चीज, बाकी लोगों से your answer script will stand out. ठीक है, I don't know how many people are. There are 33 people. Okay, I am too. There are 30 people at least today in the class. So I want to tell you is how to stand out with respect to the other people, right? Okay, so this is the fourth point. Now this is your answer script. Now this is the 5 marks question. 5 marks question are the compulsory one, right? And you can also get 5 marks question inside the every group. You can get, there will be questions like 10 plus 5 plus 10 or 10 plus 5 plus 15, which becomes 30. Okay, now inside there are different sections and they will have 10, 15 or 20 marks question. How to do that? Now, if you're getting a 10 marks question for which you will have 2 pages limitation, again, go with diagram first. Means if you know the question, if you know what kind of diagram will be best representative here, draw the diagram first and then fill the rest. For 20 marks question where you will have 4 numbers or 4 number of pages. So वहाँ पे you write down text, start with the text, because you have to fill 4 pages or at least 3 pages, right? 3 pages you can go with this. You have to write till 3 pages. So there will be a lot of text you will write. So accordingly, see the pages. As you have 3 pages, accordingly you divide every page ki kitna text de paoge, kitna diagram de paoge. So if you have such kind of question which has 3 representative diagram, then go ahead with this. This is a perfect question for you. If you don't have 3 different diagram, fill the text first and next page may give the diagram first and then fill the text, and next page may give the diagram first and fill the text. So these are the few process how to write. Okay, so this one is how to write the next longer questions. Now, if you have doubt, ask me now. Okay, doubt about writing. Okay, writing speed, writing anything, because I'm going to cover the rest as well, speed and all. But if you have any doubt about, please ask me. Please go ahead. Okay. Let me see the chat box. So there is no other question I'm expecting. Okay, fine. How important is writing? Okay. How important? Okay, Nishta, thank you so much. I forgot to see the text.
how important is writing? What do you mean by that? How important is writing? Matlab, you are asking me with respect to the diagram, or you मैम are handwriting मैम फिर से बोलिए. handwriting Handwriting, yeah. Okay. It's not important. Okay, it's not. Okay, I have seen people with a very bad handwriting. I have seen people with a very good handwriting. They tend to give the same marks or more than each other, which is completely normal. So there is no such constraint about a good handwriting. Okay, there is no such. Only you need is a readable handwriting. जो पढ़ के समझ आए. आपका हैंडराइटिंग अगर कोई पढ़ सकता है, it's completely fine. मतलब और कुछ जरूरत ही नहीं है. Per page, how much time we should take? Okay, so the time distribution. So the time distribution is very, very, very important, especially the key factor of the examination. So per page, if you have a 20 marks question, 15 marks question, 10 marks question, so distribute among, suppose you have, like, I haven't thought about the timing, but I will still suggest that you can go with 10 or 5 minutes per page. Not 10, I guess 7 minutes. That will be better. Because as I was preparing with the UPSC, I kept into with me that civils में हम लोग करते हैं कि 7 मिनट पर पेजेस का एक टाइमिंग रखते हैं. ठीक है, कि 7 मिनट में you have to finish that, and if you cannot, move on to the next page. Don't waste your time on that very page. Okay, and there will be people, or there will be suggestions that you have to, the answer, you have to write that answer पूरा अच्छे से, and the answer you don't know, don't go for that. There will be some kind of suggestions like this, but I will suggest whatever you know, try to reflect there. मतलब जो आंसर पूरा अच्छे से आता है वो भी लिखो, जो थोड़ा बहुत आता है वो भी लिखो. ठीक है, ऑल यू नीड टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स ओवर देयर. ठीक है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि कहानी बनाओ, झूठ लिखो, गलत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, बिकॉज दैट कैन गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन. बट अगर कोई आंसर अच्छे से आता है, सपोज 15 मार्क्स का क्वेश्चन, यू गेट अ फोल्ड क्लासिफिकेशन, अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रैमसेस फोल्ड क्लासिफिकेशन. सब लोगों को पता है रैमसेस फोल्ड क्लासिफिकेशन. सो you are writing 1 page, you are writing 2 page, you are writing 3 page, and the answer is finished. So if you can write that particular 3 pages in a less amount of time, not giving your 100% to the question, but giving your 50% of the your effort to the next question which you don't know, or 60% you know, that will be a benefit. समझ आया कि अब जो जो क्वेश्चन तुमको पता है उसको सजाने में टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, you should not do that. जो क्वेश्चन नहीं पता उसमें भी 20 or 30% of effort should go from the previous question, right? So this is how you can manage time. Okay, so 5 minutes, 7 minutes, and the thing is, if you still cannot, because time management is very difficult, especially offline exam है ना, तो जब आपको कॉपी देते हैं, कॉपी देने के बाद there are formalities you have to do, fill the roll number, फिर roll number को गोल गोल करो, ये वो, it takes 5 minutes. पैनिक हो जाते हैं लोग. It takes 5 to 10 minutes because हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी करें, but the invigilators are very strict, honestly speaking. So they are very slow and they do really a lazy work, right? So तब हमारा 5-10 minutes चला जाता है एग्जाम के स्टार्टिंग में. So उसको कंसिडर करो. जब मैं एग्जाम दी थी, मेरा जब 5-10 मिनट चला गया, मेरा पूरा एग्जाम का एक प्लानिंग था वो बिगड़ गया था. ठीक है, सो फर्स्ट पेपर में मेरे साथ ही हुआ था. आई पैनिक्ड. ओके, 5 मिनट्स चला गया, ओके 10 मिनट्स चला गया, नाउ आई हैव टू डू हरी. देन हरी करते करते चीजें थोड़ा डिले हो जाता है. All I'm saying is उसको दिमाग में रखो that after the examination सुबह 9 बजे से पेपर शुरू हो रहा है, 9:05 या 9:10 तक टाइम जाएगा ही जाएगा towards your invigilator. मतलब जो लोग फर्स्ट रो में बैठेंगे उनका फास्ट 2-3 मिनट जाएगा, जो लोग सेकेंड रो में बैठे हैं उनके
एडजस्टेंट वाला 2-3 मिनट जाएगा. देन कमिंग टू 9-10 9-15 तक दे विल डू द फॉर्मेलिटीज, राइट. सो फॉर्मेलिटी में 5-10 मिनट जाएगा. ये कंसिडर करके प्रिपरेशंस करो लिखने का. इफ यू आर राइटिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग राइटिंग, डू दैट. ओके, तो इतना कंसिडर कर लो. सो पर पेजेस यू कैन मैनेज. दिस इज द टाइम कि बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपना पूरा 100% मत दो. Okay, now to any other questions if you have about writing, Nishta. हेलो मैम. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Hello. मैम एक सेंटेंस में पूरा लिखने से ना मेरा टाइम बहुत जाता है. जैसे कुछ ग्रेनाइट के एम्प्लेसमेंट हुआ, उसका कंपोजिशन, वो सजाने का लिखने में बहुत टाइम नष्ट हो जाता है. तो मैम वो जैसे शॉर्टकट में लिखते हैं ना हम, उसका कंपोजिशन एडो, एम्प्लेसमेंट एडो देकर वो शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हैं ना, समटाइम्स वो और डायग्राम दे देते हैं. ऐसे करके होता है क्या? जब मैंने, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, इसलिए. So if I'm getting it right, you are asking about the short form of the minerals. It's like this, the compositions. तो अगर ग्रेनाइट का compositions है तो अगर ग्रेनाइट का composition हो तो you are asking something like this. मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना का क्या मतलब होता है, मुझे समझ में नहीं आता. शॉर्ट फॉर्म में वर्ड भी शॉर्ट फॉर्म में, और समटाइम्स वो सेंटेंस में पूरा पूरा करके नहीं लिखे, वो जैसे मैंने एरो देकर हम लिखते हैं ना, एरो देके मतलब फ्लो चार्ट. वो ना मैंने लाइन में जस्ट पॉइंट देते हैं और कंपोजिशन डैश देकर वो लिख देते हैं. द कंपोजिशन इज ऐसे करके ना. हाँ, you can do that. You can do that. Obviously. So writing pattern. Okay, this is another thing. Writing pattern will be different to different people. मतलब एक इंसान का जो writing pattern होगा, दूसरे इंसान का दूसरा डिफरेंट राइटिंग पैटर्न होगा. विच मीन्स कुछ लोग होते हैं जो पॉइंट करके लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैराग्राफ करके लिखना पसंद करते हैं. नाउ कोई एडवांटेज किसी को नहीं है. अंडरस्टूड दैट. फर्स्ट, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे लिखो, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे लिखो. डोंट लिसन टू समवन एल्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू. व्हाट यू आर फीलिंग इज इम्पोर्टेंट. जो कंटेंट दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कैसे लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. नाउ इफ यू आर राइटिंग इन यू आर अ पर्सन जो पॉइंट राइटिंग फॉलो करते हैं, एंड यू आर राइटिंग द कंपोजिशन, देन colon and then writing this is the composition. Now assemblage, this is the colon and writing the composition. Emplacement and writing this colon and this writing the emplacement, which is completely fine. It will take less time to fill the gap of the text, right? But diagram is necessary with the diagram. So if you give a diagram in a page and write down the composition, emplacement and assemblage or something, then after a certain point you will see कि पूरा तो भर गया. It's like that. So it's completely fine that you are not completing the sentence. But all I am saying is don't write anything in short form. This is not a presentation you are giving. This is not a PPT. This is an examination, and it is serious in sense. Okay, so don't write anything in short form. For example, if you're writing metamorphic things, you can use GRT as Garnet, but I will still prefer write down as Garnet. Okay. So don't go with anything which is in short. Especially geologically, it's fine still. Garnet, sandstone, SST, we can still write, represent, because SHL, shale, these are the notation we follow through and through. But don't write anything in short form of the English word. ठीक है, जो भी English words होते हैं उनकी short form कभी मत लिखना. ठीक है, because जो तुम्हारा आंसर चेक करेंगे, that person might be above 40 or 50. ठीक है, so that person might not know the short form also, and even if that person knows, it is not a formal way to write an answer. Okay, is it clear, Shabani? Okay, so yes ma'am. Okay, so all of you, so the writing pattern and the type of writing. So if someone is there who prefers paragraph, that
simply para writing, and you think that it might be boring, but it's not. It's completely fine. Whatever writing pattern you want to follow or you have used in past years, follow that. अगर आपको पॉइंट करके लिखना पसंद है, अगर आपको पैरा करके लिखना पसंद है, you can completely go with it. Now coming to, there are one paper only which has और के paper में, which is the third paper, which has numerical question. There will be one numerical question almost every year, I guess. If there may be, almost every year there will be one numerical question. If you go through that numerical question, if you can solve that in numerical question, attend that if you can. So if you can, I'm mentioning if you can, if you want, if you are interested, those who are interested, those who like numericals. That doesn't mean जिनको पसंद नहीं आता, जिनको मैथ्स पसंद नहीं आता वो भी करें. No, don't do anything on which you are not confident. Okay, तो उतना ही करो जिसमें confident. All I'm saying is why, because it saved me a lot of time. I did numerical, so numerical generally tend to save time. तो and ये भी बाकी लोग ये मत सोचना, those who don't want to do numerical, ये मत सोचना कि हमारा तो फिर टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है. because everyone will manage time, right? सबको मैनेज करने का टाइम होता है. मतलब कि मैं जो बोल रही हूँ कि मेरा इन्विजिलेटर 5 मिनट एग्जामिनेशन में ले लिया था, वो 5 मिनट could fill with this numerical. I saw the question, I instantly decide, okay, I have to do the numerical because I am running out of time. Okay, so it's like that. But if you're doing the numerical and the numerical is completely wrong, you will lose 5, 15 or 10 marks straight away. But if you're writing a question, you can get still 7 marks out of 15, 8 marks out of 15, something like that. But you will not lose everything, right? So it depends exactly upon you. All I'm saying is क्या कर सकते हो, क्या नहीं. Probability and possibilities. ठीक है? Okay, any more questions you have? Then I'll move to the next topic. Any more questions? Okay. Ma'am, what should be? Yeah. बोलो. Shravani, you say? न्यूमेरिकल में क्या? न्यूमेरिकल क्या कैलकुलेटर यूज करना देता है ये मेंस में? मेंस में एक्चुअली कैलकुलेटर इज अलाउड. ठीक है, कैलकुलेटर इज अलाउड. कभी कभी इन्विजिलेटर बोल सकते हैं कि कैलकुलेटर लेके क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, बट तुम बोल देना कि रूल्स में लिखा हुआ है कैलकुलेटर इज अलाउड. Okay, so definitely mention किया गया है कि scientific calculator is not allowed, but whatever calculations you will not have any scientific implication of that. तो जो भी calculator हमारे पास है 10, 12 का जो हम use करते हैं, take that along with you. ठीक है, लेके जाओ. Okay, Kriti is asking a question. Ma'am, what should be the ordering of writing? Like which questions to attend first? We can choose questions randomly to write. Yes, yes. Okay. This is a very interesting question. That definitely the order of writing, there is no such thing like order of writing, which means any question you can pick first. For example, me, I start with structural as I love structural. So I started with structural in question paper 1. Okay, paper 2, I started with metamorphic because I love metamorphic. Paper 3, I don't like anything. I started with coal and petroleum portion. Okay, so it's like that, right? So depends upon you. Whatever section you are confident upon, you can start with that. But if you don't like any particular section, you don't have any interest in a particular section, or you're not having confidence much, or sometimes क्या होता है, even if you like structural question or structural part, you get such kind of question जो आपका confidence में थोड़ा lower कर दे, confidence में problem कर दे. So then don't look back. मतलब अगर स्ट्रक्चरल शुरू कर रहे हो, स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर डोंट लुक बैक, ओके स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, लेट मी गो टू द डिफरेंट क्वेश्चन. नो, अटेंड दैट क्वेश्चन बिकॉज एनीवे यू हैव टू अटेंड, right? Anyway, you have to attempt at least 80 to 100%. If you can attempt 100%, which is well and good, but I don't think people can. I never could attempt 100%. I have only attempted 80 to 90% of the questions, and people do attempt those kind. Itna percentage of questions only. Itne percentage of question में now your marks are dependent. Right? तो बोलने का मतलब ये है, if you are reading any question, if you still have a doubt कि ये बाद में करेंगे, don't do that.
डोंट डू दैट, क्योंकि बाद में वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा। हम लोगों को लगता है बिकॉज गेट एग्जामिनेशन यू हैव गिव, नाउ गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में वापस आने का टाइम जरूर मिलता है, यू हैव plenty of time, 3 hours गेट में बहुत ज्यादा होता है, बट as you have given prelims का एग्जाम, prelims में टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, राइट? बहुत कम टाइम पे 120 क्वेश्चंस 120 मिनट, तो जैसे मैं डिवाइड की थी 1 मिनट पर क्वेश्चन, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन में जल्दी हो जाता था, कुछ कुछ क्वेश्चन में डिले हो जाता था। इट्स लाइक ऐसे करके प्लान करने से थिंग्स विल बिकम in a moderate way. Now, order of writing, again, I want to mention that you have a 5 marks question in the first section, then followed by your different sections, which has a larger question, right? So if you are such a person who can start with the 5 marks question, you can simply start with the 5 mark question. But मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका चॉइस में नहीं है, आप 5 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हो, विच इज कम्प्लीटली फाइन, आप करो। लेकिन मैं बोलूंगी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन से जब आप स्टार्ट करते हो, डोंट फॉरगेट द टाइम लिमिट, दैट हाउ मेनी एफर्ट यू कैन पुट हियर डज नॉट मैटर, यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। मतलब आप कितना भी अच्छा सजा लो, मैक्सिमम आपको 4 से 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स ही तो मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। और यूपीएससी में एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 50% ऑफ मार्क्स, मोर और लेस दिस इज द परसेंटेज दे फॉलो, दे डोंट गिव वेरी जनरस मार्किंग, ठीक है, दे डोंट डू जनरस मार्किंग। 50% मार्क्स बहुत होते हैं। So 5 marks में 2.5 generally is the average, and if you are really writing in a good manner, you can get 3 to 4 marks. But maximum 4 marks you can get out of 5. कितना भी सजा के लिखो, but वहीं पे अगर तुम 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिख रहे हो सजा के, और वहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन से टाइम मैनेज करके यू आर पुटिंग दैट टाइम इनटू द 10 मार्क्स क्वेश्चन, एंड यू कैन गेट एटलीस्ट 6 to 7 marks there. Obviously more than this, right? But both, you can manage both. You'll get 3 marks here, you will get 7 marks here. Out of 15, you will get 10 marks, which is a very good mark, more than 50%, right? So this is how you have to think and plan. Now, ये प्लानिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ही होगा, घर पे बैठ के नहीं होगा। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टू मेंशन, ओके? क्योंकि हम लोग सोचते हैं सब कुछ प्लान करके जाएंगे वहां पे जाके, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। डोंट डू दैट। मतलब कुछ कुछ चीजें होती है राइट एट द पॉइंट, एग्जामिनेशन के कॉपी में यू आर राइटिंग, यू आर थिंकिंग, एंड ऑन द स्पॉट यू आर डूइंग। तो ये सब जो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, जो चीजें मैं बोल रही हूँ, इट्स ड्यूरिंग द 3 hours ऑफ एग्जामिनेशन। इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव थिंग्स हियर। नाउ इफ यू आर हैविंग अ टेस्ट सीरीज, if you are doing a test series, if you are going through some kind of examination, some test series program, then do this, then follow this. But normally घर पे बैठ के हम जब prepare करते हैं, ये follow करना उतना possible नहीं होता है, because for me it could not be that possible, because हमारे टाइम पे test series क्या, कोई senior भी उतना approachable नहीं होते थे। Okay, so I guess that those are your question. Some other questions you have about the writing, because I might forgot different points. So जैसे आप लोग time management का पूछ लिए, चीजें पूछ ली, writing पूछ लिए, so that's how we can proceed. Okay, so there were few questions, and how to write these things I have already clear, right? I am thinking of, and agar nahi bhi hai, next classes mein I'm always there, you can ask. Now the second point, doubt. If you have any doubt about the 3-tier examination, the prelims, mains, and interview, if you have any doubt about the examination, role of geology, and this and that, if you are in doubt about giving the exam, you can just directly talk to me. Okay? If not, I will like to mention one thing. There are people who think about the prelims marks. Prelims marks. बहुत लोग हैं जो मेरे को मुझसे पूछ चुके हैं कि प्रीलिम्स के मार्क्स मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा होगा क्या, मेरा मेंस में मुझे कितना लाना पड़ेगा। The thing is, it's not that easy to calculate. मतलब even if you know your prelims marks, which I really don't trust, because आप किसी भी sources को trust नहीं
करना चाहते हो, आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो। जैसे अगर 170 मिला है तो योर मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स इज, अगर कोई भी आंसर की फॉलो करके आपको 170 मिला है, सो योर मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स इज 170 प्लस माइनस 10। यू हैव टू टेक दैट। प्लस भी 10 हो सकता है, माइनस भी 10 हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि यूपीएससी जो आंसर की फॉलो करता है, दैट आंसर की यू डोंट नो। देयर आर सम आंसर की ऑफ नेट जो हम आंखों के सामने देखते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो गलत है, जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन वो लोग उसी आंसर को फॉलो करके दे आर चेकिंग एंड एवरीथिंग, दे विल नॉट इवन करेक्ट। तो आपको नहीं पता यूपीएससी कैसा आंसर की फॉलो किया है। सो इफ यू आर चेकिंग वन मार्क्स, प्लस माइनस 10 इज ऑलवेज। हाउ मच मार्क्स शुड वी टारगेट? ओके, this is the question I'm addressing. Okay, so prelims के marks जिसको जितना भी मिला है भूल जाओ, completely भूल जाओ। Think about the mains only. Okay, think about it, how to give the exam, how to write, how to complete your syllabus, how to get the previous year questions done, ये सब सोचो। prelims के marks से कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी। You have cleared prelims, that's it, that's all you need. Okay, everyone is reading the same syllabus. Yeah, right answer. The difference to be in the list. Yeah, वही चीज मैं बोल रही हूँ, because the exam is a related exam, right? You all are writing the same thing, you all are giving the same exam, still there are marks difference. So that comes with your writing and representing manner. For example, आज इस क्लास में 30-35 लोग हैं, मैं 30 लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो, ऐसे लिखो, ऐसे एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करो, बट आई एम गारंटीइंग दिस थिंग कि वो 30 लोगों का कॉपी जब मैं चेक करूंगी, थिंग्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज एवरीवन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सब लोग अलग अलग पर्सनालिटी है, सब लोग अलग अलग इंसान है। एज ए रिजल्ट देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी ऑन देयर कॉपीज, राइट? अगर किसी को तुम आज 1 पेज दे दो या 10 पेज दे दो ऑफ द सेम नोट, एंड 5 लोगों को सेम नोट का 10 पेज दे दो, एंड यू रिप्रेजेंट देम टू एंड आस्क देम टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ द 10 पेजेस, you will get 5 different copies. This is necessary, you bound to get, because वो 5 लोग 5 डिफरेंट मैनर से सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 पेज दिया गया है, उस 10 पेज से मैं बस 2 पेज लिखूंगी। मैं सोचूंगी कि ओके, इससे क्या डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन इफ देयर आर नो डायग्राम, still I will think, okay, there are cycles, there are maybe geochemical cycles. I will write down and I will give the cycles so that my answers stand out of those 10 people or 5 people, right? तो ऐसे रिप्रेजेंट करना जरूरी है। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ जबरदस्ती, इट कम्स विथ योर ओन थॉट सेंस। ओके, and examination is a relative examination, which means relative examination का मतलब होता है कि अगर 5 लोगों को तुम्हारे से कम मार्क्स मिले हैं, then you will be on top. अगर 5 लोगों को तुम्हारे से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, you will be on the bottom, right? Because it's equally possible. So it's not an absolute exam कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दिया गया है 300 400 कि इतना मिलने तो उसको ही लेके जाएंगे। नो, इट्स रिलेटिव, दैट इज व्हाई कट ऑफ varies from year to year. Every exam is relative, right? तो ऐसे ही आंसर स्क्रिप्ट डिफरेंट होते हैं। मैंने भी सपोज मैं भी तो सेम सिलेबस में एग्जाम दी हूँ। मेरे साथ मैं 2020 में भी सेम एग्जाम से सिलेबस में एग्जाम दी हूँ। मेरे साथ जो भी थे वो भी तो सेम सिलेबस में एग्जाम दिए, लेकिन स्टिल थिंग्स आर डिफरेंट। Why? Because of their different way of writing the same answer. Okay. Okay. So I guess Nishta it's completely fine with you. Difference to be in the list. Yeah. How much marks should we target? I'm addressing that question first, and then I'm going to Pragati. Okay. 1 second. Ruko. So prelims marks are not so important to target for now. The next is for mains, how much marks should we target? There is no such concept of targeting marks, which also means you never know how that person will give you marks who is sitting on the चेकिंग डेस्क और जो बैठा है वहां पे एग्जाम आपका कॉपी चेक करेगा। विच मीन्स आप क्या करोगे, आप टारगेट क्या करोगे, आप मार्क्स टारगेट नहीं करोगे, आप सिलेबस टारगेट करोगे। आप टारगेट क्या करोगे, आप क्वेश्चन पेपर टारगेट करोगे।
ठीक है, कि यू ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन, डोंट कैलकुलेट। हम लोगों का क्या है ना, एमसीक्यू एग्जाम दे दे के कैलकुलेट करने का आदत लग गया है, which is true, even if you don't want to accept, it's true। एमसीक्यू एग्जाम दे दे के कैलकुलेट करने का आदत हो गया है कि गेट का रैंक करना है तो आई हैव टू रैंक अबव 70 टू गेट within 30, I have to rank above 80 to get within 10, I have to do 60 above to get within 50 and stuff। ऐसा नहीं होता। It's a writing examination. So as it is a writing examination, it depends on the person who is checking. It's a manual checking. हमेशा याद रखो, it's a manual checking, not computerized checking. So whatever you are planning is not valid. Okay? जो भी मैनुअली देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स वेरी रिस्की, इट्स अ रिस्की डील। लोग, हम बचपन में बोलते थे जब हिस्ट्री का कॉपी चेक करते थे कोई भी सर, हम लोग सोचते थे यार वो सर खुश रह जाए ताकि हमारा हिस्ट्री कॉपी में मार्क्स अच्छा मिले। इट्स द सेम, स्टिल इट्स द सेम, बिकॉज वो पर्सन का मेंटालिटी, उस पर्सन का चेकिंग हैबिट, हाउ इट इज, दैट विल डिपेंड ऑन, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर मार्क्स। ठीक है, तो ये सोचने का अभी कोई फायदा नहीं कि मेंस में कितना टारगेट करना चाहिए। हाँ, ये पूछ सकते हो कि मैम जनरली मेंस में कितना मार्क्स आता है लोगों को? मैक्सिमम, the maximum marks is 300 out of 600. Now 300, I am not saying absolute, 300 plus minus 10, okay, 310 or 20, 330, 340 also can be there, but that person will be for only one person। एक इंसान का इतना मार्क्स जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, दिस इज अ मैक्सिमम। सो द एवरेज मार्किंग इज around 280 to 70, this is the average people get। So all you will get, इतना मेहनत करने के बाद you can touch 300 or barely this, मतलब upper limit, right? This is, if this is the upper limit, you can touch that, right? That is enough, you want that only, उतना ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम उतना कर लिए, फिर उसके बाद प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू कोलैब होके, नाउ यू नो कि इन द लिस्ट वेयर यू स्टैंड, इट्स लाइक दैट। So this is the maximum marks of mains can be। तो इतना समझ आ गया कि कितना भी कोई अच्छा लिखे, 600 में 300 दे रहे उसको, 300 दे रहे उसको, which means 50%। So every question, every answer of your question can get 50% or more than that। ठीक है, मतलब 15 में से 7.5 और 8 you can get very easily। Now you have to target for, ठीक है, मुझे 10 मार्क्स मिल जाए, 10 मार्क्स मिलने के लिए you have to represent your answer extraordinary। ये है, अभी आपको इतना टारगेट करना है, बाकी मेंस का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर टारगेट करना है, मार्क्स ऑटोमेटिकली विल बी डिसाइडेड। ओके सौरभ? Okay, ma'am, when we draw a diagram in an answer, how to connect with it to the answer? Like, we need to describe that again in writing. No. Why do you need to connect the answer? Your answer is already connected to the, your diagram is already should be connected to the diagram, answer. Okay, for example, again, I am taking example of, suppose a metamorphic question is there about facies. Okay, they are saying कि metamorphic facies zone and what is the thing? Another thing is isotope, right? Isotope नहीं, भूल गई मैं। So in जिसमें index mineral appear करता है, I forgot the term। So these are the things you have to represent in a connection, represent in a question। बोला है कि facies zone इनको represent करो। Now you are going with a facies diagram, ठीक है? Now you are going with a facies diagram, PT axis, and you started with the zeolite facies and green cyst, amphibolite, and stuff. Here you are going with this, and here we are going with this. So these are the three things you have to draw in three different directions depending on your PT axis. This is a medium PT. This is a higher temperature, lower pressure. This is a higher प्रेशर, लोअर टेम्परेचर, ये चीज आपको मेंशन करना है। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे मेंशन नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, ए बी एंड सी दे दो, नीचे लिख दो ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। योर डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। जो इंसान आपका कॉपी देख रहा है, दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट।
ठीक है, उसको हम अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे दैट पर्सन विल गेट इरिटेटेड. सो नाउ फेसिस, तो फेसिस का तुमने डेफिनेशन लिखा कि हाँ फेसिस ये होता है. हाउ कैन वी हैव डिफरेंट फेसिस? तो डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर में ये फेसिस का वेरिएशंस होता है विच इज रिप्रेजेंट इन द डायग्राम. बस. एंड गिव द फिगर नेम. या this is another important thing. Figure name is important. Now figure 1. So every figure in your answer sheet should have a connection, which means अगर metamorphic कर रहे हो तो उसका figure 1 metamorphic is next question, second question में it will be figure 2, third question में it will be figure 3, fourth question में it should be figure 4, followed by every different section. मतलब अगर metamorphic के बाद you are going to igneous and followed by the metamorphic में आपने 4 figure का नाम naming किया. Igneous में you start with the figure 5, which means your figure numbers in an answer sheet should be in a correlation with each other. Okay, this is the thing. मतलब अगर नहीं भी है which is also fine. All I am saying is how to make your answer stand out. ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती है, आपके लिए काम करता है. जो इंसान वहां पे चेक करेगा वो आपका आंसर ही चेक करेगा. लेकिन कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जिनको ओसीडी है, जो देखेंगे अच्छा ओके दिस इज नाइस, दैट इज नाइस, देन दिस पर्सन हैज रिप्रेजेंटेड द आंसर इन very good manner, which work will as a positive sense to you. ठीक है, so this is how the writing and marks distribution will be there. Now you're coming to the next thing, your preparation. Now everyone has started preparing. I'm assuming obviously you have to. Now there will be students who are having their MSc thesis at the last moment, who have already passed MSc and who are pursuing PhD as well. So PhD as well. So there are the 3 kind of different students. And now these 3 students में कुछ किसी को कोई एडवांटेज, किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं है. कीप दैट इन माइंड. हम लोग सोचते हैं दैट पर्सन विल बी एडवांटेज बिकॉज इसका अभी एमएससी खत्म हो रहा है तो सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा. बट ये पर्टिकुलर ग्रुप सोचेगा कि हाँ हमें तो थीसिस भी लिखना है, प्रेजेंट भी करना है और मेंस भी लिखना है, कहाँ टाइम है. सेकंड पर्सन हम सोचेंगे कि यार इसको टाइम ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये तो घर पे बैठा है प्रिपेयर कर रहा है तो इसके पास ज्यादा एडवांटेज है. थर्ड पर्सन के लिए हम सोचेंगे कि इसका तो एक्सपीरियंस है, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मिलेगा. सो इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंसर कॉपी में इट्स नॉट रिटन दैट यू आर एन एमएससी स्टूडेंट, इट्स यू आर पीएचडी स्टूडेंट, यू आर एन एमएससी पास स्टूडेंट, घर पे बैठ के प्रिपरेशन करो. इट्स नॉट रिटन, इट्स ओनली योर रोल नंबर. ठीक है, तो कुछ फायदा नहीं है. all those things which matter is how you represent your answer and how you write the thing, how neatly and cleanly you can describe a thing. That's it. बाकी कुछ मैटर नहीं करता. Another thing I want to point out for a diagram, जो मैं भूल गई, if you're drawing a diagram like this and labeling is necessary. ठीक है, labeling is necessary. Now how to label? Draw just arrows like this. Okay, not this. Arrows like this कि ये है, ये है, ये है, ये represent कर रहा है, ये represent कर रहा है. Try to draw straight arrows. Okay, straight arrows. Don't draw your arrows in a particular angle. ऐसे ऐसे कोई जरूरत नहीं है. It makes your diagram looking ugly. और कुछ नहीं. सिर्फ straight arrow क्या करता है, सुंदर दिखाता है और कुछ नहीं है. Now coming back to preparation again. So anyone has any doubt about preparation, that they have started this preparation, they are having this kind of question and stuff and this, don't be afraid of discussing things because आपको ऐसा लगना नहीं, obviously everyone is your competition, ये सोचना है, but हमेशा इतना सोचना कि if you are sharing anything, your knowledge will not be decreased. Someone else might be increased because that person can get it, but your knowledge will not be decreased. So definitely you will gain something if you share. Okay, so if you want to share anything, you can. Okay, so preparation first. Yeah. मैम आपने जो डायग्राम का मैनर बोला ना, वो फर्स्ट में एक बार रिपीट करें प्लीज. वो एक साइड में डायग्राम दे सकते हैं ना क्या, ऑल्टरनेट मैनर में
मैंने वो जैसे लेफ्ट में लिखा और हाँ, साइड में so लिखा और follow only one thing. If you are following the diagram, if you're drawing a diagram of a question and writing an answer, and you're following that thing, that the diagram is in the right thing, right side, follow that throughout your exam. And if you are plotting the diagram in a left side, and follow that throughout the exam. And but it's not necessary to do it if you by mistakenly do not actually um, कीप इन माइंड कि प्रीवियस 4 क्वेश्चन में मैंने लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है, नहीं याद आ रहा है, मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं, लेफ्ट और राइट में कहीं पे भी ड्रॉ करो एंड गो ऑन. ओके, बट इफ यू वांट टू रियली फॉलो वन काइंड ऑफ मैनर. इफ लेफ्ट साइड में दे रहे हो वो दो, राइट साइड में दे रहे हो वो दो. एंड इफ इन यू हैव ओनली वन पेज, 5 marks का question, you have only one page, and if you want to represent multiple diagram, I will suggest not to do that, because बहुत डायग्राम अगर डाल दोगे तो जो आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं, दैट पर्सन विल गेट एजिटेटेड इन द सेंस, वो सोचेंगे कि यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम द राइटिंग. ठीक है, तो ऐसा मत करो. अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है which can be represented to 2-3 with the 2-3 diagram, try to give in one particular section 2 diagram. That's it. मतलब एक सेक्शन में ही 2 डायग्राम देके छोड़ दो, बट राइटिंग थोड़ा बहुत रखो. Okay, so this is the thing. Now moving on to the preparation, what are the key points? So key point of this preparation, as you have only 2 months now left, is to prepare your own notes. नोट्स. तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि तुम लोगों को अपना अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करना चाहिए. जब मैं क्लासेस भी लेती थी तब, अभी भी बोलूंगी. क्यों पता है? इफ यू आर रीडिंग योर ओन नोट, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इजियर टू रिफ्लेक्ट दोस व्हाइल यू आर राइटिंग. तुम जब लिखोगे, इवन इफ याद नहीं आ रहा है, लिखते लिखते पता नहीं कुछ काम करता है, याद आ जाता है. इफ यू व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, याद आ जाएगा. तो डोंट पुश योरसेल्फ कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, अभी तो कल हॉटस्पॉट पढ़ा था, क्यों नहीं याद रह रहा है, कैसे नहीं याद रह रहा है, ऐसे. ओके, सो राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग डाउन योर ओन नोट्स. मतलब अभी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर बना के नोट्स लिखें कि सिलेबस वाइज नोट्स लिखें कि क्या लिखें. मतलब whatever topic you are reading right now, for example you are reading wind के बारे में आप पढ़ रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी में. नाउ गो थ्रू द विंड की different types of landform of wind. You are going through that. So erosional and depositional. Write down कि depositional. Now depositional में 1, 2, 3, 4, these are the landforms. And so any of those points, if you are not sure कि वो याद नहीं रहेगा, उसके बारे में elaborate कर दो. मतलब कि अगर तुमको याद रह रहा है तो उस पर्टिकुलर वर्ड लिखने से ही the note is enough for you. अगर याद नहीं रह रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर दो, ताकि तुम जब रिवाइज करोगे तब वो चीज आपको रिफ्लेक्ट करने में इजी हो. इज इट क्लियर? एंड मतलब मैं इसलिए ये चीज सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज वी हैव अ लेसर टाइम, राइट? And if you don't want to do it, still if you want to write and you have a very speedy manner, you can do that. But कम टाइम है, and क्या होता है कि विंड को लिखते लिखते 1 दिन 2 दिन स्पेंड हो गया, which you cannot do right now. Okay, तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी चीजें हैं, स्पेशली विंड एंड ऑल, जिनका बस लैंड फॉर्म्स आते हैं, डिपोजिशनल एंड इरोशनल फॉर्म्स आते हैं, you should be completing that thing in 1 single day or maximum 2 single day, 2 days. तो 2 days में तुमको सारी चीजें करनी है. मतलब विंड हो गया, कोस्टल लैंडफॉर्म हो गया, रिवर हो गया, एंड एवरीथिंग. सो लैंड फॉर्म्स में जिनमें बस डिपोजिशनल एंड इरोशनल फैक्टर्स है, बिकॉज यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ तो आई हैव प्रिपेयर्ड थिंग्स लाइक दिस जो मुझे समझ आए. ठीक है, डिपोजिशनल एंड इरोशनल कर दिया है, फिर मैंने एक एक वर्ड लिखा है, वो वर्ड मैं जानती हूँ कि उस वर्ड का मतलब क्या है. आई कैन एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द एग्जाम, सो आई डिड दैट. ठीक है, ऐसे. बट ऐसा नहीं है कि आप 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूरा लिख रहे हो और फिर उसको रट रहे हो और एग्जाम में जाके कहीं पे भूल जाओगे. तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए. ऐसा कर नहीं सकते, मतलब करने से भी चलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टडी. जो लोग जैसा पढ़ते हैं वो लोग वैसा करो. दिस इज वन वे आई एम रिप्रेजेंटिंग व्हिच आई डिड. ओके,
Now, note preparation is a must. Now, second is because examination में एक दिन का भी छुट्टी नहीं है, back to back examination 9 to 12 and 2 to 5. Second day 9 to 12 and 2 to 5. There will be no such day. तो जब 9 to 12 and 2 to 5 first day exam हो गया, उस दिन को रात में जो टाइम मिलेगा उसमें तुम पूरे कॉपी अपना उल्टा उल्टा के देख सकते हो कि हाँ हाँ ठीक है ये चीजें हैं for the second day. That's it. तो इसीलिए notes prepare करना is necessary. Now, so second point is, ma'am, if I already have notes, so not according to mains, but I have covered almost every topic, then should I make more to answer writing to previous year questions instead of investing time in making notes again? No, you don't need to. You don't need to. All I'm saying is who don't have a note or don't have a handwritten copy. Okay, so if you have handwritten copy and you are confident about it, go with it. It's fine. It's completely fine because see, the thing is, अगर geomorphology पढ़ रहे हो, तुम्हारा GATE में geomorphology, NET में geomorphology, GSI में geomorphology will not be different from each other, right? It's not. So it's the same thing. All I'm saying is to prepare your note because वो revision करने में आसानी होता है. तो if you have already your handwritten things, if you have already your notes जो prepare करने में आपको easy होगा, that's completely fine. That's all you need. Okay. Now previous year question पे आती हूँ. Yeah. मैम आपने जो बोला ना लैंडफॉर्म और डिपोजिशन इरोजन फॉर्म में, मैम वो उसमें तो बहुत सारी होता है ना, बहुत विंड का और रिवर का बहुत पॉइंट होता है मैम, कितने मिनिमम देना पड़ता है डिपोजिशन लैंडफॉर्म कितने मिनिमम? हाँ, वो हाँ. ना कंफ्यूज हो जाता है टाइम, वो मैंने बहुत होता है ना, वो लिखने में सर टाइम मैंने चला जाता है वही मैंने. हाँ, सो इट्स नॉट लाइक दिस कि तुमको 5-6 लिखना है, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. सी हाउ मेनी पेजेस में, एक पेज में अगर तुम्हारा लैंड फॉर्म आया है क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन कैन कम इनटू 10 or 15 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? सो यू कैन हैव 2 to 3 पेजेस. नाउ 2 to 3 पेजेस, नाउ यू हैव टू सी कि तुम्हारे हैंड राइटिंग के हिसाब से 2 to 3 पेजेस में मैक्सिमम how many point you can fit in. फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड फॉर्म देख रहे हो डिपोजिशनल वाला, मैं डिपोजिशनल में दे सकती हूँ 5 से 6 पॉइंट, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती. वट एवर इट इज, अगर ये बहुत अच्छा डिपोजिशनल फीचर है जिसमें टोटल 10-12 है, मैं स्टिल 5 से 6 दूंगी बिकॉज मेरे हैंड रिटन पीपल मतलब थिंक के हिसाब से दैट इज द एनफ, बिकॉज 5 से 6 यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द डायग्राम एज वेल. ठीक है. And erosional में भी I will try to follow 5 to 6 because मेरे hand writing के साथ size of the letter I write, ये that will fit in 2 to 3 pages. ठीक है. तो it's not necessary कि आप सारे दो, बुक में जो है सारे देने की कोई जरूरत नहीं है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होती है. डोंट चूज सबसे अनोखा वाला, सबसे हटके वाला टर्मिनोलॉजी. डोंट चूज दैट. यूज द यूजुअल थिंग्स, यूज द नॉर्मल थिंग जो सुन के सबको यर्डंग्स, जो सुन के सबको पता चले कि हाँ यर्डंग क्या होता है, पता है मुझे यर्डंग क्या होता है. यू हैव टू चूज दोस काइंड ऑफ थिंग्स. डोंट चूज द डिफिकल्ट थिंग जो लगे आपको आंसर को, आपको लगेगा कि हाँ आंसर को हटके बनाएगा. डोंट चूज इट एट फर्स्ट. मतलब 5 पॉइंट में से 1, 2, 3, 4 में यू यूज द नॉर्मल यूजुअल वन. एंड अगर आपको लगता है कि ठीक है ये लैंड फॉर्म ये चीज हटके है, देन 4th पॉइंट पे 5th पॉइंट पे यू कैन गिव. बट वो हटके चीज का डायग्राम यू शुड रिप्रेजेंट एज वेल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपका कॉपी देखते हो वो हटके चीज को नहीं जानते. ओके, सो दैट्स इट. According to your answer, according to your handwriting, you can choose. Now, going to this previous year question. Previous year question, how necessary it is? It is very, very necessary because considering the time limit you have. तो क्या करना है? Previous year questions आज, this is 2023 exam, right? So you have question paper of at least 10 years later. 10 years का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास मतलब रिप्रेजेंटेटिव में होना चाहिए. अगर नहीं है तो मुझे आप बोल सकते हो, आई कैन प्रोवाइड. ओके, सो 10 years I have I guess 2009 तक क्वेश्चन पेपर शायद मेरे पास है.
बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट उतना चाहिए, लेकिन 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आप रिविजन कर सकते हो ना। 10 इयर्स क्वेश्चन में कैसे देखना है, तो 2021 में जियोलॉजिस्ट के पोस्ट्स नहीं आए थे, राइट, सो विच मीन्स और जियोलॉजी का पेपर विल बी एब्सेंट। बाकी एवरी ईयर में और जियोलॉजी का पेपर मतलब थर्ड पेपर इज देयर। तो ये चीज दिमाग में रखना है। नाउ every subject, every paper go with a paper wise formula, मतलब geology 1. Now geology 1 go with the year 2022, 21, 20, 19, 18, go like this, and notice कि every subject में what are the repetition, ठीक है, what are the repetition if they have any, they should have, I'm saying you, they should have. So what is the repetition pattern that they are representing, what kind of repetition? For example, as far as I can remember, mineralogy. So if you're if you're reading mineralogy and going through previous year questions, you have those questions of mineral structure, right? जिसमें mineral structure लिखना पड़ता है, mineral का structure. Now, वो mineral का structure लिखने के लिए you have certain mineral groups which are given in the syllabus. Garnet हो गया, pyroxene, amphibole, this and that, clay, chloride and stuff. So the repetition pattern is such that every year you will have different mineral groups coming. For example, इस साल olivine आया, इस साल pyroxene आया, इस साल garnet आया, इस साल this आया, इस साल that आया, but there will not be much repetition. तो उस केस में क्या करें, उस केस में 2023 का एग्जाम दे रहे हो, 2022 के एग्जाम में मिनरोलॉजी में जो क्वेश्चन आया था, आई गेस इट वाज ओलिविन, जो क्वेश्चन आया था, यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर पार्ट लेस इंपॉर्टेंस का मतलब इसको 5 मार्क्स के लिए ही पढ़ो, 10-15 मार्क्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं. यू कैन गो through 21 से rest of the years and सारे mineral group you have to cover because you never know which mineral group will come to this year. ठीक है, तो ऐसे करके you have to make your own study about the previous year questions for these parts. Now there are previous year question के जो pattern follow होते हैं जिसमें से repetition बहुत strongly रहता है. As far as I can remember is your coal. Suppose coal. Now coal may there are analysis, right? Those analysis, proximal analysis and ultimate analysis. So the ultimate and the proximal have a repetition in alternative years. So you can see that obviously हम लोग जब ऐसा repetition based study करते हैं तो थोड़ा doubt आता है मुझे. मैंने जब preparation किया था, I had plenty of time during my during COVID and all, तो मेरे पास notes prepare करने के लिए time थे, ठीक है. लेकिन बात है कि जब आप ऐसे छोड़ते हो कुछ चीज, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है. सपोज प्रॉक्सिमल के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप अल्टीमेट पूरा ही छोड़ दो. सो गो थ्रू दीज टू, वन जिसमें 15 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, जिसको रिपीटेशन में आपको स्ट्रांगली बिलीव होता है कि हाँ ठीक है, दिस क्वेश्चन माइट बी रिपीटेड इन 23. So this question prepare yourself for 10-15 marks and for this question prepare yourself for 5 marks. Okay, because जो कॉमन सेक्शन होता है उसमें रिपीटेशन डोंट ट्राई टू फॉलो. ओके, दिस इज अनदर थिंग. हाँ, जो कॉमन सेक्शन होता है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर्टिकुलर मार्क्स के क्वेश्चन में रिपीटेशन डोंट ट्राई टू फॉलो. ठीक है, उसमें उसको रिपीटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू विल गो थ्रू एवरी सेक्शंस इन डिटेल, आप ऑटोमेटिकली सारे चीजें कवर करोगे टू फिल द कॉमन सेक्शन. राइट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान. ये मैं आज इसीलिए बता दी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके पैटर्न एंड रिपीटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट का, स्पेशली डिफरेंट सेक्शंस का. तो मैं इसलिए आज बता दी कि आप रेस्ट टाइम पे 1 week, आफ्टर 1 week आई विल टेक अनदर क्लास. सो 1 week पे आप कर लो, you do your analysis with the question papers and syllabus and make your own thing. Okay, this is the thing I have to give very important, this is the thing I cannot give much of the importance. Okay, and
ऑब्वियसली जो चीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप फॉलो कर रहे हो, in your syllabus mark that thing as done. Okay, because in the syllabus every part can constitute of a single question. So if you're preparing a question and that question from a particular syllabus, wo question us particular part tumhara prepare ho gaya, baki part you have to prepare. It's like it works like that. Okay. Okay, so do you have any more question, or today I want to drop the class? If you have any question, I can answer those. Otherwise, we'll see you in the next class. Is it fine? Okay. And if you have any suggestion that how, what should I share next, then you can always contact me in Telegram and say that what are the things I have to share. So today's class has been concluded, guys. Thank you so much for attending. Yeah. मैम आई हैव रिक्वेस्ट रिमोट सेंसिंग का नोट्स आप इस ऐप में शेयर करेंगे क्या? किस मैम चीज का एक्चुअली वो notes? पार्ट मेरा रिमोट सेंसिंग का वो पार्ट मेरा कुछ हाँ डाउट लगता है, वो रिमोट सेंसिंग और केमिकल एक्सप्लोरेशन होता है ना उसका। केमिकल एक्चुअली एक्सप्लोरेशन मतलब और का? हाँ मैम, वो थर्ड पार्ट ना मैंने एग्जैक्टली बुक में सारे हाँ वो जो पॉइंट करके होता है वो नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ वो दो अच्छा, ओके। टॉपिक। तो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे आई विल एक्चुअली डू द सिलेबस वाइज सो रिसोर्सेस। ठीक है, तो कहाँ से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब सिलेबस में कौन सा पॉइंट कौन से बुक या कौन सा नोट से कवर कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आई हैव डन। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे एंड आई कैन देन आई कैन शेयर कि अगर हमारा रिसोर्सेस सेम होता है श्रावणी, मतलब जैसे मैं अगर पर्टिकुलरली बोलूँ कि इस बुक से मैंने किया था एंड you have that book, then I can tell you exactly the page name and all. Okay. And if not, if the book is not with you, then I will upload my notes and resources, whatever I have. Definitely I will upload. ठीक है, जो जो सब्जेक्ट है, जो जो मेरे पास लिस्ट है, मैं वो सब चीजें अपलोड करूंगी for you guys, right? This is a protocol that I'll do, that I'll upload. But before uploading, I really want to go through कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से आप कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, ऐसे करके ना। So yeah, okay. So I guess that's it. That's the questions you have. Okay. So you can leave the meeting right now. I am concluding today's class, and thank you so much for attending. And congratulations to all of you who have qualified every exam, not only mains, gate, and something. Congratulations to all of you. This is how you represent yourself, right? Okay. Thank you so much for attending. You can leave. Okay. Okay. Welcome.